Very good morning, my dear students. So, next set of MCQ of 2014 AIPMT paper. Question number 111 on your screen. Anoxygenic photosynthesis is characteristic of. Okay, dear student, if you are talking about your anoxygenic photosynthesis, right? So, anoxygenic photosynthesis in the sense photosynthesis process which do not releases oxygen, I can say, right? So it is basically non-oxygenic photosynthesis. What options are given? Rhodospirillum, Spirogyra, Chlamydomonas and your ulva. Okay, if you are talking about your Spirogyra, Chlamydomonas and your vulva, this involves release of oxygen. Whereas if you are talking about your rhodospirillum, right? So this comes under your anoxygenic photosynthesis. So question number 111, answer number 1, rhodospirillum is going to come. Okay, now let's look out question number 112. A few normal seedlings of tomato were kept in dark room. After a few days they were found to have become white colored like albinos. Which of the following term will you use to describe them? Okay, mutated, embolized, etiolated and defoliated. Okay, dear student, what it is? Normal seedling of tomato, matlab normal seedlings, it is having green leaves. We are keeping the same in dark room. So सारा starch जो है it will become over. Yes, after few days they were found to become white color. Okay, वो green से कौन से color के हो गए हैं? White color. So basically the term which we use to describe this is etiolated. Etiolation का मतलब क्या होता है? Lack of chlorophyll pigment. Okay, why this chlorophyll pigment become deficient? Due to absence of sunlight. Am I clear? So वी हैव kept in dark room, वहाँ पे सनलाइट नहीं है, राइट? सो कौन सा प्रोसेस होगा? इटियोलेशन, राइट? सो 112 आंसर नंबर 3 इटियोलेटेड इज गोइंग टू कम. लेट्स लुक आउट क्वेश्चन नंबर 113. Which one of the following growth regulator is known as stress hormone? Okay, plant growth and development, your class 11 chapter number 15 question belongs. Stress hormone पूछा गया है. ग्रोथ रेगुलेटर्स माने वी आर टॉकिंग अबाउट योर प्लांट्स, है ना? वैसे इन एनिमल बॉडी स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इट्स एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन. येस, वी नो इन आवर केस, बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ प्लांट? तो स्ट्रेस हार्मोन इज योर एब्सिसिक एसिड. यस और नो? यस, इट मेक्स प्लांट टू विथस्टैंड स्ट्रेसफुल कंडीशन, है ना? तो अंडर स्ट्रेस कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? Abscisic acid. So stress hormone is abscisic acid. Answer number 1 is going to come. Okay, let's look out question number 114. Geitonogamy involves. Okay, geitonogamy हमको अच्छे से पता है. Yes, sexual reproduction in flowering plant, class 12 chapter number 2. What is geitonogamy? It involves two different flowers belonging to same plant. हमको ये अच्छे से पता है. Yes or no? Two flowers belonging to same plant, that is geitonogamy. What is autogamy? Same flower. Yes, and cross pollination हमको अच्छे से पता है. Let's read out the options which are given. Fertilization of a flower by the pollen from another flower of same plant. देखो ऑप्शन 1 ही सही है, राइट? सो 114 का आंसर नंबर 1 आएगा. हावेवर लेट्स लुक आउट अनदर ऑप्शंस टू. फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो ये तो ऑटोगैमी है. फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन सेम पॉपुलेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन है. फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पॉपुलेशन, ये भी नहीं होता, राइट? सो एज आई सेड, व्हाट इज geitonogamy? देखो ऑप्शन नंबर 1, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एज आई सेड, two different flowers belonging to same plant, right? So question number 114, answer number 1 is going to come. Okay, now let's look out. Male gametophyte with least number of cell is present in. Okay, male gametophyte with least number of cells is present in. What options are given? It is Pteris, Funaria, Lilium and Pinus.
Okay, it is Lilium and Pinus. Okay, dear student, if you are talking about your male gametophyte with list number of cells, so as we have understood your angiosperms है ना, मेल गैमेटोफाइट आर योर पोलन ग्रेन जिसके अंदर दो पोलन आई मीन टू से दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. इनसाइड वन पोलन ग्रेन देर इज प्रेजेंस ऑफ टू मेल गैमेट, राइट. सो इसका आंसर क्या आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा. व्हाट ऑप्शंस आर गिवन, टेरिस, फ्यूनेरिया, लाइलियम एंड पाइनस. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो लाइलियम है इट इज बेसिकली योर angiosperm. Am I clear? Yes. So dear student, 115 answer number 3 Lilium is going to come. Am I clear? Yes. Now let's look out. वैसे if you're talking about your male gametophyte, we people have understood it is having vegetative cell and it is having generative cell. हाँ या ना? हाँ. Yes. Generative cell divides to form मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स हमको अच्छे से पता है. तो बेसिकली मेल गैमेटोफाइट में एक वेजिटेटिव सेल होता है एंड दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, लिस्ट नंबर ऑफ गैमेट्स. ओके, सो इसमें आंसर नंबर 3 आएगा, दैट इज योर लाइलियम. लेट्स लुक आउट क्वेश्चन नंबर 116. एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम. ओके, एग्रीगेट फ्रूट पूछा गया है तो दिस इज डायरेक्ट आंसर. इट डेवलप्स फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम. Okay, what options are given? Multicarpellary syncarpus gynoecium, multicarpellary apocarpus gynoecium, complete inflorescence and multicarpellary superior ovary. So basically aggregate fruit develops from your multicarpellary apocarpus gynoecium. 116 answer number 2 is going to come. Next one, 117. Pollen tablets are available in the market for. Okay, pollen tablets, we know कि pollen are very rich in nutrition. Yes or no? Yes. So this can be used as a food supplement for athletes, we can say. Yes. So let's look out the option: in vitro fertilization, breeding program, supplementing food, ex situ conservation. So what answer is going to come? Pollen tablet पूछा गया है. So 117 answer number 3 supplement food is going to come. Let's look out question number 118. फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू. फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड्स. यस, फीमेल गैमेटोफाइट विच वी कॉल एज योर एम्ब्रियो सैक, है ना. इट इज बेसिकली हैविंग 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ऐसा ही कुछ वी पीपल हैव अंडरस्टूड, राइट. तो फिलीफॉर्म एपरेटस विच इज प्रेजेंट इन सिनर्जिड, उसका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. Let's read the options which are given. Recognize the suitable pollen at stigma, stimulate division of generative cell, produce nectar, guide the entry of pollen tube. So 118 answer number 4, guide the entry of pollen tube is going to come. Let's look out question number 119. Non-albuminous seed is produced in. Okay, non-albuminous seed पूछा गया है. That is basically your non-endospermic seed, है ना. Maize, castor, wheat and pea. तो कौन सा आंसर आएगा? It's P, which is non-endospermic, non-albuminous seed, right? So 119 answer number 4 is going to come. Let's look out question number 120. Which of the following shows coiled RNA strand and capsomer? The diagram for the same is given in biological classification chapter number 2 class 11. Coiled RNA strand and capsomer कौन सा दिया है? देखो, it's your tobacco mosaic virus. What options are given? Polio virus, tobacco mosaic virus, measles virus and retrovirus. So 120 answer number 2, tobacco mosaic virus is going to come. Okay, let's read question number 121. On, okay, sorry, which one of the following is wrongly matched? Okay, wrongly matched पूछा गया है. Transcription, writing information from DNA to tRNA, ये गलत लग रहा है ना. What is transcription? Basically transcription is a process by which your mRNA is formed from DNA. Translation using information in mRNA to make protein. Yes, this is true. Repressor protein binds to operator to stop enzyme synthesis. ये भी true है. Operon, structural gene, operator and promoter. Yes, it consists of these 3 things. तो wrongly matched क्या है? Transcription.
राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए टू एमआरएनए आना चाहिए, राइट. सो 121 आंसर नंबर 1 इज गोइंग टू कम. Let's look at question number 122. Transformation was discovered by Griffith. ये तो हमको अच्छे से पता है. Transforming principle using, yes, कौन सा बैक्टीरिया था? Pneumococcus. Yes or no? Yes. Okay. So answer number 3 is going to come for 122. Next, 123. Fruit color in squash is an example of, चलो देखो कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे. इट इज़ योर रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज देयर, complementary gene is there and inhibitory gene is there. Dear student, if you are talking about your fruit color, if you are talking about your fruit color in squash, तो वो एग्जाम्पल है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस का. Am I clear? That is an example of your dominant epistasis. Okay, so fruit color in squash अच्छे से याद रख लो ये आप. fruit color in fruit color in squash is an example of your dominant epistasis. Okay, चलो basically dominant epistasis, what is epistasis आपको पता होना चाहिए dear student. तो if you are talking about your epistasis, तो epistasis is a phenomenon of masking the apparition of gene by another non-allelic gene. Okay, epistasis क्या है? Phenomenon by which we mask expression of gene by other non-allelic gene. Am I clear? Okay dear students, you should know the definition of epistatic gene, the gene which suppresses the expression of non-allelic gene. जो जीन है ना सप्रेस करता है expression of non-allelic gene is called as your epistatic gene. Okay, and if you are talking about your dominant epistasis, तो इसका रेशियो क्या आता है? 12:3:1. 12:3:1. ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में बेसिकली क्या होता है? एपिस्टेटिक जीन इज डोमिनेंट ओवर इट्स ओन एलील. एपिस्टेटिक जीन इज डोमिनेंट ओवर इट्स ओन एलील. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एन एग्जाम्पल आएगा फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो. And cucurbita pepo is nothing but our squash, summer squash. Okay, for your information, if you are talking about your recessive epistasis, everyone note down 9:3:4 का रेशियो आता है. यहाँ पे क्या होता है? एपिस्टेटिक जीन इज रेसेसिव ओवर इट्स ओन अलील. ओके, एंड इसके एग्जाम्पल में लिखो कोट कलर इन माइस. एवरीवन राइट. रिसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4. इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? कोट कलर इन माइस. कोट कलर इन माइस. ओके, कॉम्प्लीमेंटरी जीन. कॉम्प्लीमेंटरी जीन का रेशियो एवरीवन राइट 9:7. 9:7 लिखो एवरीवन. कॉम्प्लीमेंटरी जीन का 9:7. ठीक है. ओके, so for this fruit color in squash, it is an example of your dominant epistasis. Answer number 2 is going to come. Let's look out question number 124. Viruses have, chalo let's look out. DNA enclosed in a protein coat. Okay, prokaryotic nucleus, single chromosome, both DNA and RNA. Okay dear student, prokaryotic nucleus. Virus is exceptional case, we know. Single chromosome we cannot say. Both DNA and RNA, it is not so. Either viruses are having DNA or RNA. It can be single stranded or it can be double stranded. So 124, DNA enclosed in protein coat. This should be the suitable answer. Protein coat is your capsid, which is made up of capsomer. So 124, answer number 1 is going to come. Okay, let's look out question number 125. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is insulin. Yes, we know this thing. Insulin, estrogen, thyroxine, progesterone, right? The first human hormone, that is insulin, produced by Eli Lilly company. So 125, answer number 1 is going to come. Okay, an analysis of chromosomal DNA using
सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, कौन सी टेक्निक दी गई है यहाँ पे? इट्स योर सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूजेस, ये पूछा गया है आपको. ओके डियर स्टूडेंट, वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर ब्लॉटिंग टेक्निक, राइट? सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ऐसा कुछ वी पीपल हैव अंडरस्टूड. ओके, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग, क्या दिया गया है? सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डू नॉट यूज बेसिकली इलेक्ट्रोफोरोसिस, ब्लॉटिंग, फिर क्या दिया गया है? ऑटो रेडियोग्राफी, एंड फिर क्या दिया गया है? इट्स योर PCR. ओके डियर स्टूडेंट, दिस कम्स अंडर योर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, है ना? व्हाट इज ब्लॉटिंग टेक्निक? डू यू नो? Everyone write it down. What it is? The analytical technique. It is an एनालिटिकल टेक्निक, कुछ फाइंड करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, विच इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम स्पेसिफिक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. ठीक है. ओके, नाउ स्पेसिफिकली क्या पूछा है? इट्स योर सदर्न हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज सदर्न हाइब्रिडाइजेशन और सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, राइट? इन विच व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम सेल्स. ओके, वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम सेल्स. से फॉर एग्जाम्पल WBC में से ये डीएनए लिया जाता है, ल्यूकोसाइट्स. ओके, फिर ये डीएनए को वी आर लेबल इट टू फॉर्म अ हाइब्रिड, है ना? Later on, what we are going to do, labeled DNA hybrid complex are formed, and finally we are exploring this to X-ray films. ठीक है. ओके, तो देखो, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, ये सब कुछ होता है सदर्न ब्लॉटिंग में, एक्सेप्ट योर PCR. सो डज नॉट यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है. तो सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर नदर्न ब्लॉटिंग, तो ये आरएनए आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग लेबल्ड डीएनए और आरएनए प्रोब. एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? प्रोटीन वी आर आइडेंटिफाइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड एंटीबॉडी प्रोब. प्लीज राइट डाउन दिस थिंग. सदर्न ब्लॉटिंग में वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई डीएनए, northern blotting we are going to identify RNA, and western blotting we are going to identify your proteins. ठीक है. So 126 answer number 4 is going to come. Okay, now let's look out question number 127. In vitro clonal propagation in plant is characterized by, in vitro clonal propagation in plant is characterized by, okay, PCR, RAPD, northern blotting, electrophoresis, and HPLC, and your microscopy. In vitro clonal propagation in plant, dear student, it is characterized by your PCR and RADP. So 127 answer number 1 is going to come. Okay, let's look out question number 128. An algae which can be employed as food for human being is, we know, right? It's a Chlorella spirogyra is used as a food. Eulothrix, Chlorella spirogyra, Polysiphonia. So what answer is going to come? Answer number 2, Chlorella is going to come, right? So 128 answer number 2, Chlorella. Let's look out question number 129. Which vector can clone only small fragment of DNA? Only small fragment of DNA पूछा गया है. BAC, that is your bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, plasmid or cosmid. What answer is going to come? Answer number 3, plasmid. Question number 130 देखें. An example of ex situ conservation is national park, seed bank, wildlife sanctuary, sacred grove. So what answer is going to come? It's your seed bank. So 130 answer number 2. Let's look out question number 131. A location with a luxuriant growth of lichen on trees indicate that the, okay, lichens कहाँ पे grow होता है? In non-polluted area. It's an pollution indicator, we know. Lichen grow हो रहा है. It means ये जो जगह है, it is free from pollution. Okay, let's read out the options. Trees are very healthy, trees are heavily infested, location is highly polluted, location is not polluted. So what answer is going to come? Answer number 4. Okay, match the following and select the correct option. अब आप ये मैच करो. चलो, earthworm, right? Succession, ecosystem service,
and your population growth. चलो, earthworm क्या, detritivore you can say, succession, pioneer species, ecosystem service, pollination and population growth, natality, है ना. A2 B 1 2 1 4 3 2 1 4 3. Okay, 2 1 4 3. So that is answer number 4. Chalo. Question number 133. A species facing extremely high risk of extinction in immediate future is called critically endangered. We know this thing. Vulnerable, endemic, critically endangered and extinct. High risk of extinction in immediate future. So that will be answer number 3, critically endangered. Let's look out question number 134. The zone of atmosphere in which ozone layer is present is called, bolo, stratosphere, है ना, ionosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere. What answer is going to come? It's your answer number 3. Let's look out question number 135. The organization which publishes the red list of species is IUCN. Yes, we know this thing, right? So 135, answer number 2, IUCN is going to come. And dear student, here are your set of MCQ, right? We will meet in next lecture with next set of MCQ. Bye everyone.